hello children. How are you? Your Rupinder ma'am is back. Today ma'am will take you out. We will go out. So are you ready? Yes, yay! We will go out today. Oops! But what happened? Children, it started raining. Now how will we go out? Oh, it's raining. See, children? Oh, children, now that the rain has started, we can't go out. Wait a minute. We can go out using an umbrella. है ना? We can carry our umbrella. And then we can go out. Let me see if I have an umbrella. Okay. Oh, here I have an umbrella. So children, we can use the umbrella and we can go out. Okay. But ma'am is wondering how this rain is formed. Children, have you ever thought how rain is formed? तो चलो ऐसा करते हैं. We will go out some other day. Today we will try to find how rain is formed. ठीक है children? I really wonder where the rain comes from. Children, let us find out how the rain is formed. Look, children. This water is very hot now. We are going to be just very careful and not go very close to it. Now, if you look carefully, you will be able to see this steam coming out of it. Yeah? When the water is heated, we can see that steam comes out of it. Like this. ये जो धुआं जैसा दिख रहा है ना बच्चों, this smoky kind of thing, this is called steam. Now, ma'am will keep a cold plate above this vessel and we will see क्या होता है. Okay, children? ये देखो, ma'am has kept a cold plate on the top. Children, now see. अब जैसे ही ये स्टीम ऊपर आएगा ना, कोल्ड प्लेट को टच करेगा ना, तो यू विल सी दैट ड्रॉपलेट्स आर फाउंड. प्लेट के नीचे ड्रॉप्स जमा हो जाएंगे. अभी देखना. ऐसे ही व्हेन देयर आर मेनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड बिलो द प्लेट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन अगेन. चलो देखते हैं. नाउ द स्टीम इज टचिंग दिस कोल्ड प्लेट. And see one drop has fallen down, children. Have you seen that? ऐसे एक एक करके drops गिरते रहेंगे. This is how rain is formed. The sun heats up all the water on the earth. धरती पर जितना भी पानी है ना, ये तो हमने थोड़ा सा पानी लिया है, तो ऐसे ही धरती पर जितना भी पानी है उसे सन गर्म कर देता है और वही पानी फिर ऊपर चला जाता है. इट गोज अप इन द स्काई एंड बिकम्स क्लाउड्स. और क्लाउड्स में सारा वाटर होता है एंड दैट वाटर कम्स डाउन अगेन इन फॉर्म ऑफ रेन. ऑल द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स हीटेड बाय सन एंड द वाटर गोज अप and comes back again in form of rain. Yes. See children, this is how it works. When sun rays falls on the water, जब सूरज की किरणें पानी पर गिरती हैं तो पानी ऊपर चला जाता है. What happens? The water goes up in the sky. जैसे steam होता है ना, वैसे the water goes up in the sky and then clouds are formed. देखो बादल बन जाते हैं और फिर उन बादलों में से बारिश होती है. What happens when the clouds are formed? The water comes down again as rain. So now we all know how rain is formed. है ना? ये रेन होने के बाद वापस यहाँ पानी आ जाता है और ये ऐसे ही चलता रहता है. So now we all know how rain is formed. तो बच्चों आप सबको बताना, ठीक है? Now ma'am will go and come back again soon.
with something new. Till then, bye bye and take care. Oh, hello children. How are you? Your Rupinder ma'am is back. Today ma'am will take you out. We will go out. So are you ready? Yes, yay! We will go out today. Oops! But what happened? Children, it started raining. Now how will we go out? Oh, it's raining. See, children? Oh, children, now that the rain has started, we can't go out. Wait a minute. We can go out using an umbrella. है ना? We can carry an umbrella. And then we can go out. Let me see if I have an umbrella. Okay. Oh, here I have an umbrella. So children, we can use the umbrella and we can go out. Okay. But ma'am is wondering how this rain is formed. Children, have you ever thought how rain is formed? तो चलो ऐसा करते हैं. We will go out some other day. Today we will try to find how rain is formed. ठीक है children? I really wonder where the rain comes from. Children, let us find out how the rain is formed. Look, children. This water is very hot now. We are going to be just very careful and not go very close to it. Now, if you look carefully, you will be able to see this steam coming out of it. Yeah? When the water is heated, we can see that steam comes out of it. Like this. ये जो धुआं जैसा दिख रहा है ना बच्चों, this smoky kind of thing, this is called steam. Now ma'am will keep a cold plate above this vessel and we will see क्या होता है. Okay children? ये देखो, ma'am has kept a cold plate on the top. Children, now see. अब जैसे ही ये स्टीम ऊपर आएगा ना, कोल्ड प्लेट को टच करेगा ना, तो यू विल सी दैट ड्रॉपलेट्स आर फाउंड. प्लेट के नीचे ड्रॉप्स जमा हो जाएंगे. अभी देखना. ऐसे ही व्हेन देयर आर मेनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड बिलो द प्लेट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन अगेन. चलो देखते हैं. नाउ द स्टीम इज टचिंग दिस कोल्ड प्लेट. And see one drop has fallen down children. Have you seen that? ऐसे एक एक करके drops गिरते रहेंगे. This is how rain is formed. The sun heats up all the water on the earth. धरती पर जितना भी पानी है ना, ये तो हमने थोड़ा सा पानी लिया है, तो ऐसे ही धरती पर जितना भी पानी है उसे सन गर्म कर देता है और वही पानी फिर ऊपर चला जाता है. इट गोज अप इन द स्काई एंड बिकम्स क्लाउड्स. और क्लाउड्स में सारा वाटर होता है एंड दैट वाटर कम्स डाउन अगेन इन फॉर्म ऑफ रेन. ऑल द वाटर on the earth gets heated by sun and the water goes up and comes back again in form of rain. Yes. See children, this is how it works. When sun rays falls on the water, जब सूरज की किरणें पानी पर गिरती हैं तो पानी ऊपर चला जाता है. What happens? The water goes up in the sky. जैसे steam होता है ना, वैसे the water goes up in the sky and then clouds are formed. देखो बादल बन जाते हैं और फिर उन बादलों में से बारिश होती है. What happens when the clouds are formed? The water comes down again as rain. So now we all know how rain is formed. है ना? ये रेन होने के बाद वापस यहाँ पानी आ जाता है और ये ऐसे ही चलता रहता है.
So now we all know how rain is formed. तो बच्चों आप सबको बताना ठीक है. Now ma'am will go and come back again soon with something new. Till then, bye bye and take care.